ओके सो व्हाट इज अप एवरीवन, मैं हूँ K9 बारबेरियन और आज मैं काफ़ी दिनों बाद वापस आ रहा हूँ एक गेम प्ले के साथ दोस्तों। और सच बताऊँ तो दोस्तों मैं नया पीसी ले चुका हूँ, आपको जैसे पता ही होगा। और मैंने उस पीसी को भाई यूज़ करना चालू ही किया था, तभी मुझे पता चला कि वो 2 कोर पे चल रहा है और मुझे उसे वापस 4 कोर 8 थ्रेड्स में लाना ही होगा। मैंने सेटिंग किया और पीसी बूम बंद हो गया। ओह शिट, फिर उसके बाद तो बड़ा बता रहा हूँ मैं, दर्द का ऐसा दास्तां चला है दोस्तों। फॉर्मेट करना पड़ा, दुनियादारी करना पड़ा। उसके बाद मेरे पास कोई और ऑप्शन ही नहीं था कौन सा गेम खेला जाए। मैंने गॉड ऑफ वॉर 3 चला के देखा और वो काफ़ी बढ़िया चल रहा था। तो ये सारी कहानियाँ तो मैं आपको बाद में ही बता सकता हूँ। तो आज हम लोग दोस्तों खेलने वाले हैं रेड डेड रिडेम्पशन 1। और सच बता रहा हूँ, बहुत सारे लोग बोलेंगे कि ये तो बहुत पुराना गेम है यार, 2010 का गेम को खेल रहे हो। पर सोचो यार, 2010 का गेम, इसका एग्जांपल मैं कैसे दूँ। अगर आपको पोहा पसंद है तो आप 2005 में पोहा खाएं या 2023 में, पोहा पोहा ही रहेगा अगर वो पसंद है तो। सो सेम ये गेम है। ये गेम ऑफ द ईयर था अपने टाइम का। इसने कई अवार्ड्स जीते हैं, इसीलिए रेड डेड रिडेम्पशन 2 भी आया जो काफ़ी हिट था। और मैंने 2 खेला है, कंप्लीट नहीं किया पर खेल के देखा है, काफ़ी बढ़िया गेम है। 1 भी वैसा ही होगा दोस्तों, मुझे तो ऐसा ही लगता है। इसे एक्सपीरियंस करके देखते हैं कि ये गेम कैसा है और कितना बढ़िया है। कुछ लोगों को ये गेम एकदम बुड्ढों वाला गेम लगेगा, मतलब ये बाबा आदम के ज़माने का क्या गेम खेल रहे हैं बाबा, ऐसा टाइप का बोलोगे आप लोग। बट मैं ये बोलूँगा, मोबाइल गेम से निकलो दोस्तों, पीसी गेम का ज़माना है, अलग ही लेवल पे हैं हम लोग ये गेम्स खेलेंगे जो एक टाइम पे मतलब मास्टरपीस थे। वो गेम मैं आपके सामने रख रहा हूँ, शायद कोई और आपके सामने नहीं रखेगा और वो बोलेगा कि ये भंगार खेलने से अच्छा है मैं फ्री फायर खेलूँ। ओके बट सॉरी, मैं नहीं खेल पाऊँगा अभी के लिए फ़िलहाल, बाद में देखेंगे। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा बकौती हो गया दोस्तों, तो चलिए गेम चालू करते हैं। ओके माय गॉड, मैं इसे इमुलेटर में खेल रहा हूँ, यस जेनिया इमुलेटर में। अगर आप लोगों को ट्राई करना है, आपके पास पीसी ठीक ठाक है तो आप लोग ट्राई कर सकते हैं। मैं सेटिंग्स आपके सामने रख दूंगा, आपको बता दूंगा, आप लोग यूज़ कर लीजिएगा। तो चलिए गेम स्टार्ट करते हैं, वो भी नॉर्मल में। ओके, कंटिन्यू विदाउट सेविंग, क्रिएट न्यू सेव गेम। वार्निंग, ये गेम काफ़ी बढ़िया होने वाला है दोस्तों। इसकी स्टोरी जो है वो टॉप नॉच है। वीडियो आएगा, आप लोग चिल होके देखिएगा। वीडियो थोड़ा सा अटक रहा है, उसके लिए मैं माफ़ी मांगूंगा, मुझे सेटिंग करना पड़ेगा। ऑब्वियसली मैं बताना भूल गया था, ये रॉकस्टार गेम्स का गेम है दोस्तों।
for one, am grateful, Mrs. Bush, that they are finally bringing civilization to this savage land. I could not agree with you more, my dear. My daddy settled this land, and I know he'll be looking down on us, pleased at how we help the natives. Yes, they've lost their land, but they've gained access to it. But Father, do you mean unless an innocent receives communion, they're destined to go to hell? That hardly seems fair. What I mean to say, Jenny, is that there is a great deal of difference between an innocent and a savage. I never thought of it that way. Yes, they lived like animals, but they're happier now. Not only do people now have motor cars, Father, but I heard that pretty soon we will be able to fly. No, only angels can fly, Jenny. No, apparently people can fly. Didn't you hear? Out in Kansas, a man even got a car to fly. I hardly think so, Jenny. Apparently, Mr. Johns wants to run for governor, which is why he's so concerned with cleaning up the state. Nate Johns. Yes. His family is nothing but hillbilly trash that came here after the war. I don't want to be judgmental, but this state should not be ruled by such a disgusting family. A family without class. Apparently, the Johns family have made a lot of money, and he has a lot of friends in politics. Mrs. Bush, money isn't everything. There are many things that money cannot buy. It seems that money can buy good. What you must remember, my dear, is that we have been brought here to spread the word. And the word and civilization, they are the same thing. They are the gifts. It is the opportunity we have, the chance to live among people who are decent and who do not kill each other, and who let you worship in peace. It's so confusing, Father. Sometimes I find it impossible to make the distinction between a loving act and a hateful one. I mean, they often seem to be the same thing. Yes, Jenny, it is confusing. But you only have to ask me if you need help. Indeed. Well, here we are, Mrs. Bush. Armadillo. Good to see you're still walking after that poker game. Armadillo Station. Okay, go to saloon. So, अभी तो सही चल रहा है हमारा गेम. ओके, ये गेम दोस्तों वाइल्ड वेस्ट में मतलब आधारित है. मतलब उस समय का ही है जब अमेरिका में मतलब कॉलोनाइजेशन चालू हुआ था ब्रिटेन से, और नेटिव्स को मतलब ब्रिटेन वाले लोगों ने मतलब भगा दिया था और अपना यहाँ पर पूरा ये व्यापार स्थापित कर दिया था और पूरा कब्जा कर लिया था दोस्तों. उसी को ये दिखा रहा है कैसे यहाँ पर रेसिज्म है, स्लेवरी है, दुनियादारी है, वो सब आपको देखने मिलेगा. ठीक है, अगर आपको मेरी बात समझ नहीं आ रही होगी तो आप 16 साल के बच्चे होंगे या फिर उससे नीचे के. Mr. Marston, over here! बुढ़ाओ के You must मजे be हैं. John Marston. Sometimes. I'm Jake. Your friends from Blackwater hired me to guide you. They ain't my friends, but pleased to meet you, Jake. I got the horses saddled up and ready out front. You might be right, but I doubt it. ऐसी जगह में हम भी जाना चाहेंगे दोस्तों. ओह बट हम तो गेम खेल रहे हैं, हमको कहाँ से जाने मिलेगा. ओके,
ये घोड़ों की बात कर रहा था। You ain't ओह gonna ये find देखिए, sturdier horses than these in all of New Ulster. यस, अपन घोड़े में चढ़ेंगे। Take it easy until we're out of town. Ain't no point in causing a row. ये a company Jake to Fort Mercer या Mercer जो भी है। घोड़ा रुक जा। So it's Fort Mercy you want to visit? That's right. Ain't taking nobody up to the fort in a long Whoa. time. Strange place for a ये decent घोड़ा तो fella to बहुत wanna तेज है visit, दोस्तों। if you don't mind me saying. Who said I was a decent fella? It's been abandoned for years now. Folks say it was built during the Mexican War. All kinds of soldiers around back then. Why'd they leave? Well, I ain't entirely sure. I heard they had to go up north to fight Indians, or maybe they got tired of being soldiers and went looking for gold. कतई बंजर You जगह है know क्यों? how things is. आपको नहीं लगता? So what are you doing up at बहुत the ही fort? बंजर I'm looking दोस्तों। for an old friend. Well, like I says, you ain't gonna find many folk around those parts these days. Those you do find are about as sociable as an ulcerated back to you. I mean, I गेम ain't one to judge a इमुलेटर में man खेल by रहे the हैं हम लोग company he तो keeps, थोड़ा but- बहुत तो Well, he ain't been इधर friends उधर for का a ग्लिच long होगा ही time. दोस्तों। आप लोग एंजॉय करना। ओके, ये कैसी जगह है? हम लोग Are you पहाड़ियों में planning on घूम रहे हैं। spending any time in Armadillo, Mr. Marston? I doubt it. I ain't planning on staying very long. Well, if you're fixing for some female company, you can do a lot worse than Armadillo. Fine as cream gravy they are. Not like Steve's Yeah, friends. Rangila Dang, Buddha. those girls ain't even fit for a drinking man to hole up with. I'm a married man, I'm afraid. Ain't we all? सही में भाई, बुढ़ऊ चाचा तो वही कतई रंगीले। ओके, ये हमें कहाँ लेकर जा रहा है? Oh, it was the marshal who hired me. Lee Johnson, do ये you know him? मार्शल I हम think लोग I heard पहुँच his गए। name. Says he got a telegram from some Blackwater big bugs asking for a guide. I guess it's none of my business. That's right. ऐसा मेरे को मजा आता है कि हर गेम में हर एक जगह का अलग अलग नाम हो, तब मजा आते रहता है। You कम ain't से कम very याद तो talkative, रहता है। are you? Nope. I'm just chewing the dog, mister. It's how I am. I don't mean nothing by it. Trust me. There's things you're better off not knowing. I'll tell you, Mr. Marston, those coyotes eat better than I वहाँ do. पर देख लो दोस्तों, Not far now. You'll see the सियार fort है when you वहाँ get पर। to the top of this hill. अब कायोटी को मैं सियार बोलूँ कि क्या बोलूँ, पर कायोटी आप जान लो थोड़ा सा सियार जैसा ही दिखता है। Listen, mister. This here is what's left of Fort Mercer. Some gang rode in and took the place over. So I understand. This is where we part ways, friend. You have yourself a good time. ओके, सो बुढ़ऊ चले गए, हमको यही आना था इस फोर्ट में, और चलिए देखते हैं हमको जाने मिलेगा कि नहीं। फोर्ट जैसा तो नहीं लग रहा, कबाड़ खाना लग रहा है दोस्तों। खोल भाई इसे। कामयाबी कितनी अच्छी होती है। देखने में तो कोई नहीं दिख रहा है यहाँ। Bill, I've come for you. Bill Williamson! Come out here right now! Go away now, John. Don't make me kill you. Nobody needs to kill anyone, Bill. You must think I was born yesterday. You always did think I was an idiot. That ain't fair, Bill. You were as my brother. I've come to try to save you. Oh.
Do I look like I need saving? Bill, please. They want to kill us all. I can help you. Well, you never tried to save me before. You only seemed to save yourself. Bill, I implore you think about this. You implore me? You implore me. You always were one for fancy words. Oh. Well, things are different now, John. Now I'm in charge! No more Dutch! And no more you. Implores. I implores you to go back and tell them to send someone just a little bit more impressive next time. Well? Oh. Poor John. ओह शिट, हमारे हीरो को तो गोली लग गई भाई। ओह, यहाँ पर वल्चर्स हैं। ओ ये लोग हमारा मदद कर रहे हैं दोस्तों। बढ़िया, अब हमारा भी हीरो बच जाएगा। हर एक कॉमन मूवी की तरह ऐसा होता ही है दोस्तों, कोई ना कोई तो आता ही है। इतना जल्दी कैसे टपकेगा अपना हीरो? ये अपनी घोड़ा गाड़ी में वो हमें लेकर जा रहे हैं। गेम सेव हो गया है। Oh, wow. Well, you're alive. So it would seem. So, how do you feel? I don't know the polite word for it. I do. Stupid is the word we use around here. What were you doing? I was doing something stupid. Well, you'll be okay. Once you didn't die, the doctor said you'd be fine. He got the bullets out a couple days ago. Good. It cost us $15. I'm sorry, madam. Should have left me there to die. Did you want to die? I mean, was that it? Was that why you went straight out to Fort Mercer and picked a fight with the worst bandit in the county? To die, Mr. Mr. Marston. John Marston. Bonnie McFarlane. Miss Bonnie McFarlane. Well, you may be right, Miss McFarlane. I don't know. Huh. So what were you doing? I was trying to give Mr. Williamson a chance. For old time's sake. You know Bill Williamson? Knew him. Long time ago. Well, what was he like? Dumb. Just like you. Thank you, miss. See my hat? I have. And, what will you do now? Now I'm gonna take my time and go after him the less kind way. Well, that sounds very fun, Mr. Marston. Quite heroic, just like in those penny dreadfuls my brother used to read. Meanwhile, if you'll excuse me, I've got a ranch to run. Of course, if you're feeling better, why not take a ride with me later? Help me patrol the perimeter. You can earn back some of that money we wasted on doctor's bills. Of course. And thank you. For saving my life, I mean. Next time, Mr. Marston, I strongly recommend you don't try to lose it quite so earnestly. I'll bear that in mind. वाह, एक सभ्य महिला मिल गई हमको यहाँ पर, जिसने हमारे हीरो को बचा लिया है दोस्तों। नहीं तो सीधा टिकट कट गया था अपने हीरो का। जॉइन बॉनी। तो बॉनी से हम लोग मिलने जाएंगे। ओह हो, कहाँ पर जाना है? बॉनी इज ब्लू ऑन योर मैप। ओके, जो ब्लू मार्क दिख रहा है ना, वहीं पर है वो। तो उसको हेलो बोल कर आते हैं। छुक छुक गाड़ी दोस्तों, छुक छुक गाड़ी।
छुक छुक गाड़ी से अपने को मतलब नहीं है, हमको मैडम से मिलना है। Mr. Marston, back in the land of the living, I see. Figured Yeah. it's about time I started paying back that $15. I sure can use an extra pair of hands around here. Let's see if we can get you back in the saddle. ओके, तो हमको इसके साथ जाना है। इस मैडम के पास हमारा उधार है, उसने हमारा जान बचाया है, तो अपना कर्ज चुकाएंगे दोस्तों, समझ रहे हो ना? किसी के ऊपर अपना कर्ज नहीं छोड़ना चाहिए, वो आदमी पागल हो There's जाएगा the नहीं तो। foreman's office. It's also where we lock up good-for-nothing outlaws such as yourself. I'm happy enough with my current quarters right now, Miss बढ़िया। McFarland. Okay, let's see if you can still ride a horse. वो तो करने में हम Come on, एक्सपर्ट हैं। time for you to see what a real ranch looks like. ये एक प्रिजन है दोस्तों, जहाँ पर निकम्मों को जेल में बंद करके रखा जाता है, हमारे हीरो जैसे। कहाँ से हो गया यार, सही बता रहा हूँ, कमेंट्री कर रहा हूँ, मेरे को इतना मतलब राड़े डल रहे हैं कमेंट्री में। To your right is the general हद store. है। You won't find Parisian high fashion, but it's good for the essentials. Very convenient. I don't think I've ever seen a ranch with its own store before. लगता ही नहीं गेम 2010 का है, बढ़िया बनाया है भाई। And here's the corral. This one's for the horses. What do you think? I'm no expert, but it certainly looks like a fine corral. I suspect you've stolen more horses than you've broken. Come on, Mr. ये जगह में Marston, घोड़े pick रहते up हैं, the pace. ऐसा बता रही है। आ रहा हूँ मैडम। I don't have time to be waiting around. बढ़िया, इतना तीखा आवाज है उस That's मैडम the का। train station. Things sure have changed since the line finally got finished, bringing in all sorts of new folk like yourself. Is that such a bad thing? Change is only good when it makes things better. Come on. वो ये घास गायब क्यों हो जा रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा है। That's the barn over there. Paul built it himself when I was just a little girl. देखा जाए तो मैंने कोई मोड यूज नहीं किया है, पैच वैच दुनियादारी, पर भी ऐसा हो रहा And है। here we are, back at the house. Let's stop for a while before we head out on patrol. You'll get no complaints from me, Miss McFarland. घोड़ा रख देते हैं भाई। What are you waiting for? Come on, I don't fight. आ रहा हूँ, शांत तो रह, ठंड पै जा। How about a cold drink, Mr. Marston? Thank you, ma'am. Getting shot then riding a horse seems to take it out of you. I could use a rest. Sure. Come on in. I'll show you the house and then you can sit for a while. Thank you. ये वाइल्ड वेस्ट वाले कपड़े एकदम खाटी है दोस्तों, एकदम Mr. खाटी। Marston, Miss McFarland. remember me telling you about the trouble we've been having with rustlers and other undesirables? I do. Will you help me keep watch on the property line this evening? Sure. I want to see just who is trespassing on our land. This is a fine weapon. Come, let's head out. The country is really beautiful at around this time. ओके, रात में चौकीदारी करनी है दोस्तों, अभी करके We'd आते हैं। best get moving. This is a dangerous time of night for us. यस, सही बोल रही है मैडम, रात में भाई हर चीज डेंजरस हो जाता है, एकदम खतरनाक। ऊपर देखो दोस्तों, तारे, वाह, क्या ही लग रहा है भाई, हाउ कूल। Whoa there! Right. इवन GTA में भी ऐसे नहीं Keep दिखते your हैं। eyes peeled for anything suspicious. Go! Thank you, Mr. Marston. I feel a lot happier someone's along with me. I feel a lot happier now I got a rifle. Well, with your trigger itch and my feminine intuition, we should make quite a team. ऐसी धीरे ही चलेंगे, ये थोड़ा स्पीड भी बढ़ाएंगे। बताओ मैडम, ये तो बड़ी धीरे चल रही है। Look, those damn rabbits are at the
crops again. Get down and give me a hand, will you? Okay. Let's see that rifle. खरगोश, I want a couple of these for the ये farm. देखो, यहाँ बहुत सारे खरगोश है दोस्तों। Did you see that? अरे मेरा निशाना चूक गया, साले खरगोश के बच्चे। ये वैसे तो खरगोश क्यूट होते हैं, पर यहाँ पर हमको उनको मारना है, तो क्यूटनेस भूल जाओ दोस्तों। अबे एरिया खाली कर। Thank you, Mr. Marston. Looks like we'll be ऐसे है। having rabbit stew tomorrow. Let's get back on the horses and see what else is going on. मैडम बोल रही है कि कल खाने में रैबिट ही बनने वाला है। इतने सारे रैबिट मार दिए कि रैबिट ही मिलेगा नाश्ते में। Let's get going. We've still got plenty of ground to cover. Okay. मिशन बढ़िया है, रैबिट मारो, दुनियादारी भूल जाओ। If it's not the rustlers stealing our cattle, it's the rabbits stealing our crops. It ain't never easy living off the land like this. Maybe you should move to a big city. Become a lady of leisure. मुझे नहीं मालूम था कि रैबिट इतने बहन के भाई। ओह शिट, The animals. ये बोर आ गई है। कायोटी बीच, इनको मारना पड़ेगा दोस्तों, ये मुर्गी खाने आए होंगे। That coyote won't be back. एक भी कायोटी नहीं बचना चाहिए। Easy now. Dead now. Good shooting, Mr. Marston. अभी तो मेरा निशाना नहीं पड़ रहा है। पड़ Well, we got rid of the coyote. साले लोग मुर्गी खाने आए थे, मुर्गी चोर। बताओ दोस्तों, ऐसे गांव देहात में रहना कितना मुश्किल है, आप लोग देख ही सकते हैं। You know, you can actually handle a rifle. It's something I've had a little experience in. Maybe Bill Williamson did get lucky after all. Luck didn't really come into it, miss. You're a useful man to have around the ranch, that's for sure. But don't think I've forgotten what brought you here. We'll do whatever we can to help you. I sure appreciate that, Miss McFarland. अगर देखा जाए तो ये गांव बहुत ही ज़्यादा मतलब वो है, मतलब डेवलप्ड दिख रहा है। साला मेरा गांव भी इतना डेवलप नहीं है, मतलब वहाँ इतने खंबे नहीं है। साला स्ट्रीट लाइट तो इसी साल लगा है, सॉरी इस साल नहीं पिछले साल। मतलब भाई 1947 में आज़ाद हुए हैं हम लोग, और लाइट जो लग रही है वो इतने साल बाद लगी भाई। स्ट्रीट लाइट की बात कर रहा हूँ मैं, तो सोच ही सकते हो आप लोग। घोड़ा बांध देते हैं भैया। Thank you for your help, Mr. Marston. Makes me kind of happy I saved your life. Get some sleep and I will see you in the morning. Good night, Miss McFarland. Yeah. You can sleep in the bed. If you sleep, you will wake 6 hours later. Okay. बढ़िया, बढ़िया, बढ़िया. You can also pick up extra ammo from the trunk in your room. Okay. बढ़िया. Hey, सेव हो गया हमारा. Good. क्या करें? सो जाएं? चलिए सो ही जाते हैं. रात को यहाँ पर ताली थोड़ी ना पीटेंगे. ओह, स्लॉट है यहाँ पर सेव करने का. तो मैं सबसे आखिरी वाला ही चूज़ करूँगा. पहले वाले में क्या है, धोखे से कभी कभार उड़ जाता है सेव. सुबह हो गई मामू, मामू, ओ मामू. ओके दोस्तों, आज के लिए इतना काफ़ी है. बहुत अच्छा खेल लिया हमने, बहुत ही रायता फैला लिया है. तो आप लोगों को कैसा लगा ये गेम प्ले, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा. आज के मिशन में हमने मुर्गी बचा ली है. कल शायद हम लोग गधे बचाएंगे, भेड़ बचाएंगे और दुनियादारी करेंगे.
उसके बारे में मेरे को नहीं पता। गाय का दूध निकालने भी जा सकते हैं ऑब्वियसली, गांव में है तो, और गोबर भी साफ कर सकते हैं। सो अगली बार मिलते हैं दोस्तों अगले वॉक थ्रू में। तब तक के लिए आपका जो काम है वो आप ज़रूर कीजिए यार, मेरे को सपोर्ट करो भाई। आप लोग सपोर्ट करोगे तभी मैं ऊपर जाऊंगा, मतलब आगे बढ़ूंगा ग्राफ में ऊपर जाऊंगा, वैसे ऊपर नहीं जाऊंगा, ठीक है। सब अगली बार मिलते हैं दोस्तों अगली वॉक थ्रू में। तब तक के लिए टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड बाय बाय फ्रेंड्स।